हमारे बीच में डायरेक्टर इम्तियाज अली, जिन्होंने बहुत सारी मूवीज, रॉक स्टार, सोचा ना था, जब जैसी मूवीज बनाई, और रॉक स्टार के बहुत से ऐसे गायक जो नेशनल एंथम के रूप में भी हमने बहुत सारे यूज किए हैं, साटा हक एक्सेट्रा। तो बहुत से ऐसे लिरिकल डायलॉग्स भी हैं, लिरिकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम याद रखते हैं। तो अभी कुछ ही पलों में हमारे बीच में होंगे डायरेक्टर इम्तियाज अली। तो जितने भी स्टूडेंट्स खड़े हैं तो प्लीज़ अपनी सीट्स पर बैठे, और हमारे आज ऑडिटोरियम का जो एक डेकोरम है उसे मेंटेन करें। द गॉड ऑफ द इंडस्ट्री डायरेक्टर इम्तियाज अली आ चुके हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत सी दिल में जब कोई मैं सोचा ना था, रॉक स्टार साटा हक एथेरक। We feel very lucky to have his gracious presence in Chandigarh University in our second Chandigarh Music and Film Festival 2022. जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, ताली बड़ी बड़ी तालियों के साथ स्वागत करें डायरेक्टर इम्तियाज अली। My dear media students all assembled here. So I, Dr. Sarika Kathar, Assistant Professor University in University Institute of Media Studies, Chandigarh University, here welcomes you all in the mesmerizing and charming afternoon. आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह की हर तरफ रंग झिलमिलाने लगे, देखकर दिल उनको झूमने लगा और सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें डायरेक्टर इम्तियाज अली। The day is really very special and I feel privileged to welcome you all in second Chandigarh Music and Film Festival 2022. As we know that second edition of Chandigarh Music and Film Festival 2022 is happening after a gap of 2 years. And we are blessed to host for today and tomorrow. So today you have to just feel this tamasha, and so let us see what we have to say about the movie Tamasha starring Ranbir Kapoor and Deepika Padukone. So let's have a review about Tamasha movie. So anyone from you can review about the Tamasha movie? We have just screened before. Yes, please, from student side. So this was a very fantastic movie, Tamasha. We have screened and we have watched before. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Imtiaz sir. So जो तमाशा मूवी मैंने यहाँ पे देखी, यहाँ पहले भी देखी, ये मेरी फेवरेट मूवी है। और उसमें जैसे स्टोरी दिखाई गई है वे की, अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही एक्सपीरियंस करते हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं, हम उसकी वजह से अपनी जो रियल पर्सनैलिटी होती है हम छुपा देते हैं। कहीं ना कहीं मैं उसकी जो वेद का करेक्टर था मैं उससे रिलेट कर पाई थी, क्योंकि जो मेरे फादर है उनका मानना है कि पढ़ाई करना इम्पॉर्टेंट होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल नो। लेकिन जो एक अंदर का पैशन है, क्योंकि मुझे स्टोरी टेलिंग करना बहुत अच्छा लगता है, और उनकी सोच ऐसी है कि सिर्फ आपको डिग्री कंप्लीट करनी है और जॉब करनी है। तो मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पाई थी। जब मैं स्टोरी टेलिंग के लिए इवेंट्स पे जाती हूँ तो उससे वो मुझे क्वेश्चन करते हैं कि इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, जॉब करो, डिग्री लो और बस एक मीडियोकर लाइफ जियो। तो मैं उससे रिलेट कर पा रही थी, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो उससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं चाहे करेक्टर हो या कोई भी आपका आर्ट हो, आप उसको दबा लेते हो और आप लोग अक्सर ऐसे चलते रहते हैं और एक दिन मर जाते हैं। सो मेरा ये जो रिव्यू था मूवी के लिए, मेरे को लगता है कि ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो सबके साथ होता है। थैंक यू। It's very genuine. Any other review from student side? Good afternoon, everyone. I am from 94.3 Maya FM. My name is Komal, and वैसे मैं पहले I am a professional product photographer, but right now I am like intern in Maya FM. So जब मैंने ये मूवी देखी थी, it's been 2 or 3 years back, तो मैंने जो मूवी देख के जो रियलाइज़ किया उसमें ये था कि ठीक है, सिचुएशन ज़िंदगी में बहुत आती हैं जाती रहती हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे पॉजिटिव नेगेटिव क्या आप निकाल के उसको दे रहे हैं सिचुएशन पे। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम द मूवी। सर, इट्स अ वेरी गुड मूवी
and being a psychology student, मैं तो बहुत रिलेट कर पाई हूँ अपनी लाइफ को, सो आई गेस सबको देखने चाहिए, तो कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। Thank you. The few lines I want to dedicate to director Imtiaz Ali sir by listening so much reviews कि जब वो मेरे लिए दरवाजे खोलता है तो यूँ खोलता है कि मैं चुप रहता हूँ और जमाना बोलता है, तो जमाना आज आपके लिए बोल रहा है। जोरदार तालियां डायरेक्टर इम्तियाज अली। मिट्टी जैसे सपने ये कितने भी पलकों से झाड़ो लेकिन फिर आ जाते हैं। So today we are having a very eminent personality who always finds a reason to travel as much as he can. A person who is not only educated about cinema or genres, but also a keen observer of his own films, who discovers himself in the movies he made, like Nadan Parinde Ghar Aaja, Sada Haq Hai Tera, Chalta Hu Mujhe Duaon Mein Yaad Rakhna. A person who thinks that Rockstar is more dear to him than any other movie. He is an Indian film director, god of Bollywood industry, producer, actor, writer, author who works in Hindi film Bollywood industry and started his career with his writings and directing television shows. He is known for Highway, Tamasha, Rockstar, Cocktail, Laila Majnu, and many more successful movies, and Sosha Anatha Jab We Met. This person is a fountainhead of illuminating ideas, is none other than director Imtiaz Ali. Mr. Imtiaz Ali has won Filmfare Award in 2008 for Jab We Met, International Indian Film Academy Awards, Producers Guild Film Awards, Screen Awards, and many more. So now we have with us Director Imtiaz Ali, and on the stage in conversation with Festival Curator Mr. Santanu Ganguly. So with a huge round of applause, we welcome you also. And eminent journalists and authors Kaveree Bamzai would be joining us shortly. So let's move further. So I would like to invite our Festival Curator Mr. Santanu Ganguly on the dais. Please. Can I come here? Namaskar, good evening. As I told you yesterday that हम तो बातचीत करते ही रहते हैं, कभी भी फोन मिला तो सबसे बात कर लूँगा, पर आप लोगों की बातें ज़्यादा ज़रूरी है। सर आपके पास है एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है आपके पास बात करने की। जो सवाल है अभी तो खैर हम लोग सारे तमाशा की उस वेग में ही चल रहे हैं, पर फिर भी जो सवाल है और फिल्मों के बारे में आप अपना जहन में रखिए, हम लोग एक एक करके आपके पास आएंगे। Meanwhile, is it autobiographical film Tamasha? Hello, good morning, Sat Sri Akal, Namaste, Salam. I'm very thankful that all of you have come over here and watched this film. And although it should not be, but it is a little rare कि एक फिल्म देखने के बाद उसके ऊपर डिस्कशन करने की पॉसिबिलिटी होती है। मैं खुद चाहता हूँ कि जब मेरी फिल्म कहीं चले तो उसके देखने के बाद मैं लोगों से पूछ सकूँ उसके बारे में। सो मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आप लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की। मुझे ये नहीं पता कि ये कावेरी जी है, कावेरी बामजाई। I will be in conversation with her. There has to be some adventure. So I missed my flight and I came by road hanging on to the car because he drove like he was flying. So This reminds us of a movie of mine actually. many movies of yours. There's so many trains, planes. पहले भी हमारी फिल्मों की हीरोइन ट्रेन मिस कर चुकी है। I'm not sure I'm the heroine, but हाँ आज मैंने plane miss किया. But thank you so much. I think आप सबने फिल्म देखी and we should talk a little about it. Yeah. I'm just saying that it is a rare opportunity for a filmmaker to be able to talk to an audience after watching the film, and a very impressionable young audience. और जरूरी नहीं कि आप लोग सिर्फ अच्छी बातें बोलो, मतलब you have to come up like in the movie and tell the truth. You know, that's more important than hearing praises for me. So I encourage you to do that. वैसे
I'm very happy to be invited over here by Kaveree and Shantanu. And I wanted to say a few things about Imtiaz before, A lot of things have been said about me. I think the audience doesn't want to hear more. No, just a few things. And तब तक आप थोड़ा सोचिए what are the questions you want to ask. But one of the things I want to say is, Imtiaz, the way you grew up and the way children now or youngsters now are growing up, I've read so much about how you used to sit in the projectionist room and used to call the projectionist from his BD break to come back, and in the days when there were projectionists, अब तो वो भी नहीं है. But I think I wanted to emphasize the idea of wasting time, Now we don't do that, the idea of just passing time, the idea of just sort of watching a movie 20 times, or, doing something that for this generation would be considered a little meaningless, So I think that is very important. The idea of slowness, which I think is so important in Imtiaz's movies also, and the way he speaks and the way he writes, everything takes its own time. And I think that is very important for young people now to listen to, because we are always in such a hurry. हमें ये करना है, वो करना है, सब कुछ. We want to achieve everything, but things happen. So we should let it take its time. So I wanted to emphasize that, and I think जो इम्तियाज की सारी फिल्मों में है, I always joke थी कि वो मिनिस्टर फॉर अर्बन ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि में प्लेन्स भी होते हैं, ट्रेन्स भी होते हैं, बसेस भी होते हैं, कार्स तो होते ही है. But more than that, I think it's the idea of time, the idea that you can take your time, your journey needn't be the fastest one. It can be the one with the most scenic route, like in highway. It can be with so many troubles and stops along the way, like Jab We Met. It can be all kinds of things, but that journey is very important. So I think that's one thing I want you to remember, and then it's over to you. You can ask the questions. Imtiaz, but you agree, that we don't have that sense of, मतलब हमारा the idea of time has changed, Well, I feel that everybody in some way is struggling with the concept of all the new gadgets we have and the technological development that has happened. So I feel, भाई इन लोगों को देखने दो पीछे जो खड़े हैं, प्लीज थोड़ा साइड में आ जाओ, अभी बहुत टाइम लगने वाला है, थोड़ा साइड में आ जाओ प्लीज, पीछे वालों को रहम करो. भाई थोड़ा साइड में आ जाओ, कितना पीछे है. इसके बाद में यहाँ बैठा रहूंगा सबके जाने के बाद, तसल्ली से कर देना प्लीज. थैंक यू वेरी मच. और थोड़ा पानी भिजवा देना यार स्टेज पे. ये जो आई थिंक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज समथिंग कावेरी आई फील वी शुड नेवर अपोज. एंड आई फील दैट अभी हम एक यूनिवर्सिटी में बैठ के बात कर रहे हैं, नॉलेज डेवलपमेंट, चेंज, दिस इज it has to happen, it should happen, and you people have to do it. All of us have to do it. But at the same time, you have to know that a change will come with good and bad. Now it depends on you. The older generation will always say things like हमारे ज़माने में ऐसा था. वो काफी बोरिंग बात है मेरे ख्याल से. वो I catch myself saying that to my daughter, and I never say it because I'm trying to also understand what is the advantage that I can take with of the new, revolutions that are happening every day nowadays. But at the same time, you have to understand and what is really good for you. Is taking a picture and sharing important, or is it a pressure? If you look at a very beautiful mountain, do you want to just take that in? To experience it. Yes, ma'am. Hello, ma'am, and good afternoon to everyone again. Yeah, I'm working as an intern in a 94.3 My FM. Oh, wow. My name is Komal. So, अभी मैंने last year ही product photography start किया था, and अभी मैं intern 94.3 में काम कर रही हूँ. सो फोटोग्राफी जब मैंने मेरी मम्मा को किसी ने जापान से, हमारे कोई फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने कैमरा गिफ्ट किया था. शी ऑलवेज यूज टू क्लिक मी एंड माई सिबलिंग्स पिक्चर्स इन चाइल्डहुड एंड ऑल.
सो मुझे लगता है मुझे वहाँ से जेनेटिक ही है मेरी ये चीज़। एंड उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 मुझे नहीं पता था मेरा इंटरेस्ट, लाइक मुझे कभी कभी ऐसा लगता था यार क्या सारा टाइम क्लिकिंग सेल्फीज एंड टेकिंग पिक्चर्स एंड मेकिंग द रिकॉर्डिंग द वीडियोज एंड ऑल। बट जब मैंने उसे एज अ प्रोफेशन स्टार्ट किया, नाउ आई गेट टू नो, जैसे वेकअप सिट में इट्स अ वेरी वेरी वंडरफुल मूवी, मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हूँ उससे। सो उसमें जैसे रणबीर कपूर, उसको इंस्पिरेशन, लाइक दैट वाज अ वंडरफुल मूवी एंड दैट वाज अ वंडरफुल इंसिडेंट दैट हैज़ बीन शोन इन दैट मूवी। वहाँ से एक चीज़ पता लगी कि कई बार हमें पता नहीं लगता, शायद हमारे पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, या फिर एटमॉस्फेयर में, मतलब आपके सराउंडिंग में कोई भी, आप कहाँ से क्या इंस्पायर हो गया, आप क्या कर दो ना, कई बार इंसान को खुद नहीं पता लगता। एंड रणबीर कपूर, उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में कितनी बार इम्तियाज़ सर के बारे में ये बोला है, लाइक सॉरी सर, वो हमेशा आपको इम्तियाज़ ही बोलते हैं, कभी कभी सर भी बोल देते हैं। तो उन्होंने हमेशा बोला कि इम्तियाज़ जो आइडियाज़, जो थॉट्स लेके आता है ना, हम कभी भी सोच भी नहीं सकते। सो मैंने भी, मुझे तो यकीन अभी भी मेरे लिए, अभी भी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इम्तियाज़ सर को एक सामने ऐसे मतलब उनको देख के उनको बोल रही हूँ। बट उन्होंने हमेशा इम्तियाज़ सर के बारे में ये बोला कि वो जो मूवीज़ और उनका जो थॉट प्रोसेस है ना, हम कभी सोच ही नहीं सकते। और ये बात आज मुझे खुद जब मेरे साथ हो रहा है तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि इंसान का जो माइंड है, कई बार वो ऐसी चीज़ें दिखा देता है या ऐसी चीज़ें आपको इमेजिन करवा देता है जो हमारे साथ होने वाली है या हो चुके हैं, हमें खुद नहीं पता लगता कि हमारे साथ हो जाएगा या हो सकता है। मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में या कॉन्शियस माइंड में कई बार क्या हो क्या नहीं है, इंसान को खुद नहीं पता लगता। एंड एट दिस, सॉरी मैम, सॉरी, जस्ट वन थिंग, इनको भी बोलने का मौका दीजिए। सॉरी, आई नो यू आर इंटर्निंग टू बी अ रेडियो जॉकी, सो यू आर डूइंग वेल, but Imtiaz, I think this is a very good point. Imtiaz, the whole idea, the experience you bring in, and the ideas you bring in. Yeah, I think आपने नाम क्या बोला था? कोमल। क्या होता है ना कोमल, जैसे कि आप फिल्म देखते हो और उसके बाद फिर आप उसमें से आपको लगता है कि अरे यार ये तो मैंने भी एक फील किया था, ये एक्सपीरियंस किया था, मैंने नोट नहीं किया मगर इस फिल्म में दिखाया गया। सो जब आई थिंक जो फिल्म मेकिंग का काम है ना, उसके दौरान आप खुद अपने आप को, जब आप लिख रहे होते हो ना या जब आप फिल्म बना रहे होते हो, तो सोचने के अलावा ना आप अपने सोच को थोड़ा सस्पेंड भी करते हो। यू एक्चुअली गो डाउन टू योर, आई फील यू काइंड ऑफ रिलैक्स इनटू योर सबकॉन्शियस। फिर ना बहुत सारी चीजें आपके बगैर सोचे आप लिखते हो, फिर आप उस पर फिल्म बनाते हो। वो चीजें आपने खुद नहीं रियलाइज की होती है कि आपने एक्सपीरियंस की है। सो ही हैड आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, इज Tamasha autobiographical in some way? The clear answer is not, that it's not autobiographical. My father did not tell me to become an engineer, but there are fragments of it. जब मैं बाद में तमाशा देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअली मेरे एक्सपीरियंस से आई हैं, मगर मैंने चाहा नहीं था बनाते वक्त फिल्म की, मेरी जिंदगी से कुछ आई। So it's for me also. I'm saying that even for a filmmaker, और आप जैसे प्रोडक्ट फोटोग्राफर हैं, आप और भी फोटोग्राफी करेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपके खुद के कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस से निकल करके आपके काम में आ जाएगी, फिर दूसरे लोग जब उसको देखेंगे उनके सबकॉन्शियस की चीज़ें उससे रिलेट करेंगी। So I feel creativity or art is not only a medium to express what you think, but express what you feel, but you cannot understand. And I think all of you will agree there's that moment in Rockstar, that kun faya kun, when Ranveer is just looking up and there is almost something transcendental happening there. When when the Qawwali is going on. That moment, I don't think you must have even planned it. No, or yeah, you planned it or whatever. How did something like that happen? Because it is so deeply moving, I think आप सबको याद होगा that moment. Who doesn't remember that? So I can't say that I did not plan it. There was that vision. There was that vision, or almost a desire. And there was no reason for it. And it's not as though again it just felt right. So
I had that in my mind before going to shoot. And then in the shoot, it was going on, and then, it's a very beautiful relationship between an actor and a director. So it's like together you discover things. And so then I told Ranbir, we listened to this song a few times sitting over there. There is the power of a place also, it's in your imagination. I don't believe there is anything supernatural, so to speak, but your own belief, your own faith takes you somewhere. So to leave, हर चीज हम पकड़ के रखते हैं. आप देखोगे कुल फायर कुल में ना बहुत सारी चीजें हैं कि कर दे मुझे खुद से रिहा. So just to leave and look like that. So I don't know why I was doing that, but yeah, people really related to it. And you have the same, sorry, we're talking about another film altogether, but you have the same feeling in Highway when Alia is sitting on top of the truck and she's taking in the mountains. Again, there's something. Yes, yeah. Because again, it's a personal, I think it was both a personal journey as well as a professional journey in a way. Because as you said, the way you collaborate with your actors, you're almost changing them, aren't you? Yeah, and they are changing me. Right. I feel that to give it that kind of expression, both are required. And the strange thing is that जब भी मैंने इस तरह की illogical बात या इस तरह का illogical scene किसी एक्टर को समझाने की कोशिश की है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने पूछा हो कि मगर ये क्यों कर रहे हैं. कभी नहीं पूछा. इसलिए नहीं कि वो मेरी इज्जत करते हैं, इसलिए क्योंकि उनको खुद समझ में आता है. और यंग है, आलिया तो बहुत छोटी है और उसने बहुत अजीब इलॉजिकल चीजें सीन्स किए हैं. पानी के सामने बैठना, शी वेंट इनटू दैट स्ट्रीम एंड बहुत ही मुश्किल से तो हमने उसको चढ़ाया. तो मैं खुद ही बहुत मुश्किल से चढ़ा था. फिर उसको बोला कि अभी तुमको आना है. फिर उसको कैसे कैसे उठा करके वहाँ रखा गया. अब करना क्या है, अब पानी को देखना है, उसकी एनर्जी लेनी है और उसको ना देख के यू गो इनटू द इमोशन ऑफ happiness. But this is too much, and then when it becomes too much, breakdown. उसने नहीं बोला कि अरे क्यों, किस वजह से. Such a small girl at that time. मतलब मैं ऐसे बात करने से बहुत ही छोटी है. Of course now she is married. It's a matter of great happiness. But she never asked why, because she could also relate as an artist to her own subconscious. So I feel, yeah, these things come and I write them. I don't know why. In a forum like this, when I'm expected to explain, then sometimes I try to be smart and come up with interesting things to say. But the honest truth is that I don't know why. Yeah, and even when, say, the song in Tamasha, when they're at social and both are, have their heads down, I mean, it's such an amazing scene. उनको बोला करने को कि नहीं बोला था. That visual was there in my mind. That vision was there. Again, क्यों? क्योंकि अभी तो वो कैसे देख रहा है, वो क्यों देख रहा है, ये क्यों देख रहा है, क्या हो रहा है. I think when you leave logic in art, it's that's when it becomes art. I think when you work with your heart and don't always bring in your intellect into everything, sometimes that's also very important because we over-intellectualize and critics का काम तो है ही to try to understand the meaning of everything. But what moved you most about Tamasha? I mean, as a young person, as an old person of young, mother of young people, that idea that of course that you want to be somewhere else, you want to be someone else, and how society sort of boxes you in. That for me is a very powerful idea, and the idea that we don't look at normally we don't look at men that way. We think, you study, you get a job, you have a career, you marry, and that's it. That's the way your life is supposed to be. But here you have a man sort of exploring what it means in a way to be a man, right? What it means to be a boy, what it means to be a man, what love is.
I wonder what you thought of it, and I wonder, Imtiaz, what is the kind of reaction you've got from young men to these journeys that you've set them on in Rockstar or Tamasha? They've all been on this journey in a way to find themselves. Yeah? So let's talk about Tamasha because it's just Yeah. over. आई थिंक तमाशा में सबसे ज्यादा रिएक्शन जो लोगों का आया है वो ये कि मैंने आपकी फिल्म देखी, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी. हाँ, बिल्कुल. Everybody wants to be late. Yeah, and I was like, बॉस तू अभी क्या करने वाला है? Do you have a job or what? So I become a little concerned, and then I wish him all the best from my heart because if he does not succeed, he'll always blame me. इम्तियाज ने मुझे बोला कोर्सिका जाने के लिए, मुझे तो दीपिका नहीं मिली. So ये बहुत कॉमन रिएक्शन था, मगर एक रिएक्शन तमाशा तो मैं नहीं भूल सकता हूँ. वो मैंने एक सिंगल स्क्रीन में मैं जाके खुद अपना पहले दिन देख रहा था. तो रात को सिंगल स्क्रीन थिएटर था बॉम्बे में. तो उसमें ना स्टॉल्स में मैं जाके ऐसे जमीन पे बैठ के देख रहा था तमाशा. तो बहुत सारे लोग निकले. अच्छा क्या होता है कि जब लोग निकलते हैं और देखते हैं डायरेक्टर है, तारीफ ही करते हैं, कोई वैसे मुंह पे बुराई तो करेगा नहीं. तो मैं पता करने की कोशिश कर रहा था कि यार ये फिल्म कैसी लग रही है. तो कुछ लोग थोड़े नाराज थे, वो चले गए. विल टॉक अबाउट दैट लेटर. बट बाकी हाँ जी आपको देखा है जी, आपको कपिल के शो में देखा है, आपको फलानी जगह देखा है, आपने वाली पिक्चर बनाई थी जब भी मैं बहुत अच्छी थी करीना ने. ये सारी बातें चल गई और we are all standing and in a circle and I'm in the middle of that circle. There must have been like 50-100 people over there and I just wanted to know यार पिक्चर कैसी लगी आपको, तो मैं आपसे भी पूछूंगा. तो सारी बातें हो रही थी. एक महिला वहाँ खड़ी थी. There was a lady of like maybe in mid-30s or something, wearing glasses, alone. and वो सिर्फ वैसे देखे जा रही थी मुझे. और थोड़ी देर के बाद मैंने बोला आपको कैसी लगी, तो she stepped up to me, 3 steps, and she just looked up at me and she said, ये पिक्चर आपको पहले बनानी थी, अब तो बहुत लेट हो गया. And she just walked away from there. And I can never forget that reaction. That was, I don't know what happened in her mind. Maybe she thought that यार मुझे भी ये काम करना चाहिए था, अब तो बहुत लेट हो गया बोल करके वो चली गई. And now I of course could never find her again. It's never too late is what I would like to say to her, maybe through another film. But how sad it is, you know, sometimes something like this happens in class, because as a filmmaker you don't always realize the impact your work is going to have. Like, how did you know my apni favorite who is going to become like, a cultural marker? And young women everywhere use it to also empower themselves. When you see this kind of reaction, do you think, what did I do? I feel it's not mine, Kaveree, honestly. I feel that मैंने भी कहीं उसको सोचा कैसे वो जैसे गालिब सहजना आते हैं रैप से ये मज़ामी ख्याल में. I don't know where it comes from, a vacuum, it comes from somewhere. It's not mine, I feel. I think I'm here. कुछ thoughts कहीं से आ रहे हैं जो मेरे नहीं है और मैं उसको फिल्मों में डाल रहा हूँ जो मेरी भी नहीं है. वो ऑडियंस की फिल्म हमेशा शोले मेरी फिल्म है, रमेश सिप्पी की नहीं है. देखो तमाशा आपकी फिल्म हो सकती है, मेरी नहीं है, मैंने बना दी. So now I'm just transferring. I'm just a lightning conductor of this. So and this is not humility. I know this is how it is. I've made too many films to know this. It's not all mine. There's nothing that's mine. It just passes on. So I don't take credit for it. It's not as though मैंने क्या कमाल की लाइन लिखी, वो कहीं से आई और चली गई. It's like that. बिल्कुल. आपने गानों की बात करते हैं because गाने इतने they seem so integral नहीं है. They seem added on or whatever. So that collaboration with people like Rahman, with Irshad, the lyricist, talk a little about that and how can all of you be in that wonderful zone that each of you understands what you're trying to say. In Tamasha, that song, again I come back to that songs I have ever heard.
Yeah, absolutely. I mean, it goes without saying. So How I many of think you can sing it? तो गाना गाओ ना. it's a difficult song to sing. Leave to sad is easier. Chali Kahani is difficult. That is difficult. Yeah, run subtitles with it. हाँ. But I feel Tu Koi Aur Hai is really the one line explanation of the film. Yeah. And the prime. Okay. चलो. After a while. Let him speak, then उसके बाद. हाँ. मैं बोलता हूँ उसके बाद आप. So हाँ, आप गाएंगे. हाँ. say. Yeah, sure. He's Nitin from. Yatin from. Oh, nice. Okay. So I was 16 years old when I saw this film for the first time in FTFS in theatre. Now I'm 20 and he's in the third year in doing direction. And there was a scene in this film which I thought you were mocking something. वेद का बॉस उसके पास आके बोलता है कि टाई का. Today I was asked something. आईडी कार्ड का. मैंने तुम्हें 3 साल से आईडी कार्ड पहने कभी नहीं देखा. What do you think कि वहाँ पे Ved is unfit for that space, for that boss, Ved is unfit. What do you think? What is that? The tag, the ID card, is it a symbol for slavery? Is it a symbol for a student? For a product? What do you think? What you were looking that system, corporate life. You are in a system where everyone right now, teachers are wearing formal, students are wearing ID card. What do you think about this system? Good question. I want to add to that. Whenever I see Vivek Mushkan in that scene, I want to slap him. What you are asking, and I think the real answer to that is that I think perhaps the difference between man and animal as intended by God is that the man has the power to rationalize and think, while the sheep has to just be in a flock and walk together without thinking. Right? So I feel that the man has the ability and always the right and the prerogative to think. Okay? It's very, very difficult to do so actually in life. Because somehow everybody tells you that aisa hi hota hai, tum aise hi karo. Now, and unfortunately, मुझे सीन याद आ रहा है एक बड़ी अच्छी फिल्म से, since you are a film student, I'll say it's called Silence of the Lambs. I hope you've seen it. It's the first part, where this Jodie Foster's character is interviewing this person, and she has gone through a scarred childhood, and the scar in her childhood is that ek dafa she was with her uncle in a farm, and they used to raise sheep, and they used to then butcher those sheep. And she used to feel very bad when she heard the sound of the lamb being slaughtered. Okay? So रात को इसने वो उठ करके गई and she tried to open the barn to let the sheep run away, but the bloody sheep were not running. धक्के मार रही थी. कभी-कभी हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम भी उसी तरह के हैं. एक जो सिस्टम हम पे इम्पोज किया गया है, एक इंस्टीट्यूशन जो हमारे पर लगाया गया है, होपफुली वो पॉजिटिव है, होपफुली वो अच्छा है, जिस धारा में हम बह रहे हैं होपफुली वो अच्छा है. पर क्या हमें ये हक नहीं है कि हम सोचें अपने दिमाग से जो ऊपर वाले ने हम सबको दिया है कि ये सही है कि नहीं, मैं इसको बेटर करूंगा या गलत करूं. सो आई फील दैट इफ वन मैन टेल्स यू डोंट थिंक जस्ट फॉलो, दैट इज डिप्रेशन. इफ यू गेट लेजी एंड से दैट यार सोचते नहीं है, कर डालते हैं, जो सब लोग कर रहे हैं मैं भी कर देता हूं, इट्स ईजियर, then you are repressing yourself. And mostly tamasha is not about other people repressing you. I think it's yourself repressing yourself. That's what I feel about so many symbols that I also see in my movies, like tie, like so many things. And people are constantly, like even a journey I feel is trying to get out of your regular environs. Right. Thank you, sir. बोलिए. जल्दी से माइक दे. Good afternoon, sir. This is Aditya Deep from BA Film and Television Studies Acting Department.
सर मैं पूछना चाहता हूँ, हम न्यूली फिल्म मेकर्स हैं, हम इंडस्ट्री का ख्वाब देखकर यहाँ पे आए हैं और हम वहाँ पर जाएंगे। एज एन एक्टर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या क्वालिटी देखते हैं एक न्यूली एक्टर में जब वो ऑडिशन देते हैं, और क्या गाइडेंस होगी एक बॉलीवुड डायरेक्टर की मुझ जैसे एक्टिंग स्टूडेंट्स के लिए कि जब वो ऑडिशंस पे तो वो किन चीज़ों का ध्यान रखें, और जब वो इंडस्ट्री में जाएं तो किस चीज़ों के फेयर्स जो हैं वो उन्हें नहीं होने चाहिए। ट्रेन एज मच एज पॉसिबल। आई थिंक जिंदगी भर एक्टर अपने आप को ट्रेन ही करता रहता है। एवरीथिंग दैट यू डू एज एन एक्टर इज ट्रेनिंग। अगेन जो सुपरफिशियल चीजें होती है ना एक्टिंग की, वो आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करेंगी कि आपकी बॉडी कैसी है, आप डांस कैसा कर लेते हो, अच्छा कर लेते हो बहुत अच्छी बात है, घोड़ा चलाते हो कि नहीं, यू नो एक्शन कर लेते हो, लुक क्या है आपकी, एक्शन कैसा करते हो, ये सारी चीजें अच्छी हैं। बट ये एक्टिंग, घोड़ा चलाना एक्टिंग नहीं है ना। सो द पॉइंट इज आई फील वॉट एवर यू थिंक एक्टिंग इज, and within that process of acting, if you can actually have an experience of not thinking and doing, try to reach there. That's all I can say. Discovery and soulmates. So मेरा क्वेश्चन ये है कि हमेशा there is a boy and there is a girl. बट आज के टाइम में जिस तरीके से LGBTQ कम्युनिटी प्रोमिनेंस गेन कर रही है सारी चीज़ों में, एंड बॉलीवुड में स्पेशली पास्ट टाइम्स में इसको एक मॉकिंग रिमार्क की तरह यूज़ किया गया है। सो माय क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक अबाउट पिक्चराइजिंग such genre of romance in future movies? No, I hope to do so. And I feel that this is like, you show your experiences of things that come to you, then sometimes you also show the experience of other people. And I think it has to be my own experience or my own insight into something. There are feelings or there are thoughts that I have about various communities, and the LGBTQ community is also a part of that, and there are some very specific, interesting things which I don't need to say because I'm going to make some social reform. I have to pick them up because they are just interesting story ideas, and I hope to do that. Thank you. So he will love Heave. The girl in the in the mauve t-shirt. Yeah. Speak. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज आप एक सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के, बट एक टाइम ऐसा भी होगा जब आपने स्टार्ट किया था अपना करियर, और आप हम बच्चों को क्या बताना चाहते हैं कि हम क्या मतलब ध्यान में रखें अपना करियर आगे बढ़ाते हुए, क्या हम सोचें, क्या हम गलतियाँ ना करें जो शायद आपने कभी करी? एक्चुअली मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ बट आप लोग वो सुन नहीं पाओगे। मतलब इन द वे दैट क्या होता है ना, फिल्मों में होता है ना कि आप बहुत कुछ ऐसे कुछ ज्ञान देते हो, दूसरा आदमी एकदम ऐसे नॉट कर देता है, तो घंटी सी बज जाती है, फिर उसकी जिंदगी चेंज हो जाती है। मेरे ख्याल से जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू रीच अ प्लेस टू हियर समथिंग एंड इट देन डिपेंड्स अपॉन योर एबिलिटी टू अब्सॉर्ब इट। सो मेरा बोलना जो है ना वो आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। आपको खुद अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा, आपको खुद तय करना पड़ेगा कि मेरी सलाह लेनी है कि भाई साहब की, एंड यू हैव टू फोर्ज फॉरवर्ड। व्हाइल यू डू दैट, एंजॉय द प्रोसेस, एंजॉय द जर्नी। गॉड हैज गिवन यू एवरीथिंग that can make you the most successful person in the world. Know that that is true for everybody, and just enjoy the journey. Don't think so much. Just go with your heart. I think that is all I can say. And as a कोई successful director, तो the fact is that जब मैं आपके इतना बड़ा था और जब मैं उसके बाद इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, ऐसा नहीं है कि आज मुझे कोई अलग सी फीलिंग होती है उससे। मैं अभी भी वही फील करता हूँ जो उस वक्त करता था, आप भी वही करोगे, राइट? बट या यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू डू थिंग्स, एंड मे बी यू विल बी हैप्पियर थिंकिंग दैट यार मैं उस दिन हॉल में थी, इम्तियाज सर से जो क्वेश्चन पूछा था उस वक्त ही मैं ज्यादा खुश थी, आज मैं बहुत बड़ी फिल्म मेकर या जो भी कुछ है बन गई हूँ, मगर उतनी खुशी अभी नहीं फील हो रही। ये भी हो सकता है। एंजॉय इट।
Last question I've been told, unfortunately. Me. Okay. मैं अपनी favorite हूँ. Yeah, always. Namaste sir and welcome to Punjab. And I am Tanvi. I am from Ludhiana and I am an aspiring actor and singer. मेरा ये क्वेश्चन है कि रॉकस्टार मूवी में कटाना भाई जॉर्डन को बोलते हैं कि तुझे कोई पेन नहीं है लाइफ में, तूने कभी हार्ट ब्रेक नहीं फेस किया, यू कैन नॉट बिकम एन आर्टिस्ट. एंड देन ही कीप्स ऑन थिंकिंग कि शायद मेरी लाइफ में सच में कोई पेन नहीं है, आई नीड दैट काइंड ऑफ पेन टू बिकम अ स्टार. So what is your personal opinion? Do you think there's some kind of tragedy or pain required for somebody to be an artist? No. So एक और मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मूवीज में आप कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाते हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है एंड धीरे करके कैरेक्टर में चेंजेस आते हैं, तो है कि सब कुछ रियल लाइफ में एप्लीकेबल है, एवरीथिंग the kind of development that a character goes through, do you think हम हर एक चीज अपनी रियल लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे? Imtiaz, you cannot give monosyllabic answer. You have to talk about No, he you has have to to talk about the pain. That is very important. This is a very illuminated audience. I'm really enjoying your question and everybody else's, because सब लोग बहुत they are not coming from a randomness, they're coming from their own thoughts and processes. Like अगर आपने मेरी picture देखी है तो बहुत process किया है. I'm really enjoying my time over here. Thank you very much. And yes, I wanted to be definite about those answers. I will explain. But the first answer is no and the second is yes. So the point is, हर आदमी, जैसे कि मैंने इसको कहा ना, वो मॉफ वाली लड़की पे आपको कि मैं तो बोल दूंगा बट आप उसको ले नहीं पाओगे शायद. It's like depends upon whether you are ready. And in the Bhagavad Gita it is said that the readiness of doing something actually judges whether you will do it, not whether it is going to be otherwise possible. So I don't so हर आदमी हर चीज इम्बाइब कर नहीं सकता. अगर वो बोले कि नहीं मैं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना फेवरेट बन जाऊँ या एक्सेट्रा, वो कर नहीं पाएगा if he is not ready. It's not just मैंने डिसाइड कर लिया. The whole thing has to happen. The whole manifestation has to happen. But it is possible technically, or I hope it is, that all of those things that you see, at least in my movies, can actually be imbibed. Right? So that's why the answer is yes. Secondly, whether pain is necessary to make someone successful or an artist. Okay? The point is, it's not the pain, but again, what you can take from that experience that can make somebody a criminal and the other person a painter, and the third person will just go unaffected by it, perhaps. So, if you look like at the lives of many artists, it's not as though जिसकी जिंदगी में ज़्यादा पेन हुआ है उसने ज़्यादा अच्छा किया है, ऐसा तो है ही नहीं. And so I feel that it is something that I was preoccupied with. I'm still preoccupied with that. ऐसा तो नहीं यार, मुझे लगता था मैं बहुत ordinary हूँ. मुझे लगता था कि मतलब if this is a success story, then the beginning is just so bland. Picture की opening सही नहीं लगेगी. So I used to think about this, and that of course has found its way in Janardhan, who deliberately is a very stupid man. And so thankfully he does not have his intellect stopping the way of a greater flow. Acha. Just come on. One last question. After that we follow your orders. Start it. लड़कियों में और लड़कों में फर्क क्यों होना चाहिए इन चीजों में?
देखो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मैं जिस क्लास में पढ़ता था ना स्कूल में, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सारी में ना टॉपर लड़कियां ही होती थी। तो और मुझे लगता है कि मेरी माँ मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है आज के दिन की, राइट। सो और अनफॉर्चुनेटली ये दुनिया का सिस्टम जैसा रहा है, औरतों को पीछे रखा गया ओवर अ पीरियड। एनीवे, लेट्स नॉट इवन गो इनटू दैट। डेफिनेटली नॉट, यू नो द आंसर, डेफिनेटली नॉट। और ये अगर कि औरतें अगर भागेंगी ऑन एन एवरेज 100 मीटर्स में, जो मेल होगा वो जीत जाएगा, ऐसा हो सकता है फिलहाल अभी। और मतलब बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिसमें वो जीतेगी। टेक्निकल जो काम होते हैं उसमें औरत कम नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है कि किसी वेट लिफ्टिंग में शायद कम हो जाए, बट अरे तो शुरू में तो सारे मेल्स होते थे ना, पायलट भी मेल होते थे, अब धीरे धीरे वो चेंज आ रहा है। हाँ जी, ऑब्वियसली, या हाँ बिल्कुल आएंगे। और उसमें मतलब मुझे नहीं लगता है कि उनकी कैपेबिलिटी में कोई फर्क है। और मतलब कि पर्टिकुलर लड़की बेटर डीओपी हो सकती है या एक पर्टिकुलर लड़का बेटर हो सकता है। दीज आर इंडिविजुअल क्वालिटीज, दीज आर नॉट लाइक जेंडर बेस्ड क्वालिटीज। ओके, Thank you so much. I can't believe that we have to end this now, but I'm being given very dark looks by your bosses. So, अब आपको इनसे बात करनी पड़ेगी अकेले में, एकांत में, as they say. I'm really sorry. It's a promise that today, due to the time constraint, we have to end it here. But Imtiaz sir will come again and again and again to talk to you one to one, and then we'll have more and more questions. Today, you have to excuse us. Thank you. Thank you, Imtiaz. Thank you so much. Thank you, Kaveree. Imtiaz Ali sir, Please give a round of applause to the rock star of. थैंक यू। so one Imtiaz Ali sir and eminent personality Kaveree Bamzai with us. So thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. I request all of you एक बार आप प्लीज जो इंस्ट्रक्शंस है सुन लीजिए। डिफिकल्टी इंचार्जेस, प्लीज आप लोग अपने अपनी ड्यूटीज पर आ जाएं, बिकॉज यहाँ स्टेज से हम लोग आप सभी को देख सकते हैं। तो आप लोग सामने बैठे हैं, आप लोगों को सब लोग नहीं दिखेंगे, आप लोग ऐसे ऐसे करके देखोगे, बट स्टेज से सब लोग कौन क्या कर रहा है सब कुछ दिखता है। Because you are the ambassadors of Chandigarh University and the faces of Chandigarh University. So I hope you will behave properly. I can see only one of you can in between us. Anyone else who has been appointed the duty to People continue rounding the audit to maintain discipline and the two faculty members from this side. I repeat, actually film studies, animation and media studies to maintain discipline in the hall. Thank you.